तो लास्ट लेक्चर के अंदर इंटरफ्रेंस के अंदर हमने क्या क्या सब देखा है, तो वो एक थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे ठीक से. यस, I hope you can see the screen. In the first lecture, we already seen about the examples, daily life examples of interference actually. तो इंटरफ्रेंस के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे थे, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल देखा था सीडी के ऊपर जो अलग अलग कलर्स हमको दिखाई देते हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरफ्रेंस. और उसका भी रीजन बताया था कि और इवन ऑयल का जो लेयर फॉर्म हो जाता है वाटर के ऊपर, तो उसमें भी हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं. तो उन सबके पीछे रीजन ये बताया था कि जिसमें whenever the ray of light just incidents on the surface of oil and water, then some rays are just getting reflected from the surface of oil directly, and some rays are getting reflected from the surface of water here. And these two rays, which are starting from two different points like this, they are having some small path difference between them or phase difference between them, and because of that, the crust and trough may be mismatching here. मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ट्रफ पे ट्रफ आ जाए या क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाए, या हो सकता है कि क्रस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रस्ट आ जाए. तो जिन कलर्स के लिए ये पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब λ/2 के बराबर का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है, तो वो कलर्स हमको नहीं दिखते हैं. और जो जिन कलर्स के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस है या ये जो थिकनेस है, ये एक्चुअली लैम्बडा के बराबर का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है, तो वो कलर्स हमको दिखते हैं. इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कलर्स हमको दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते हैं. सो एंड इवन सीडी के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं. तो उन ग्रूव्स के अंदर टॉप टिप से रिफ्लेक्ट होने वाले जो रेज और वैलीज या ट्रफ से रिफ्लेक्ट होने वाले जो रेज है, तो उन दोनों के बीच में एक छोटा पार्ट डिफरेंस फिर भी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ही हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं. फिर अगेन हियर यू कैन सी सोप फिल्म के ऊपर भी हम कई बार इस टाइप का पैटर्न देखते हैं, कलरफुल पैटर्न देखते हैं. नॉट ओनली दैट, इवन बटरफ्लाई जो होते हैं, तो उसके भी अंकुरियम के ऊपर से अलग अलग कलर्स हमको दिखाई देते हैं और शेड्स, अलग अलग शेड्स हमको दिखाई देते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस. अगेन यू कैन सी, जस्ट वेट. Here we can see another example of interference. We can clearly see that soap bubble जो होता है, तो soap bubble के अंदर ही भी हमको इस टाइप के अलग अलग कलर्स जो दिखाई देते हैं. So this colorful pattern formed is actually called as interference. तो ये जो है इवन ये हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी करके देख सकते हैं आराम से, जो कि हम देख सकते हैं कि वाटर का जो रिपल्स पैदा होते हैं वाटर के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम ये इस टाइप के दो होल्स अगर गिरा देते हैं, ये इस टाइप के यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे दूसरा होल है, तो ऐसे दो होल्स अगर गिरा देते हैं, तो इसमें से जो निकलने वाले वेव्स है, दे विल जस्ट स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स लाइक दिस. एंड द वेव्स spreading from the second wavelet here or second source here will also just spread in the form of spherical wavefront like this. And these spherical wavefronts will just meet each other at some points constructively and at some points destructively, and hence different points, just like we can see here. ये जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है. लेकिन जबकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है. सो ऑल द पॉइंट्स इन विच द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस आर इन द सेम लाइन. Even all the points which are where the constructive interference takes place are also in the same line in this way. तो ये सारे एक सेम लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. तो ये हमने ऑलरेडी देखा था. ओके, तो बेसिक बात ये हमको समझनी है. This is how the interference pattern actually looks like, in which the different colors, if suppose green colors को use करके अगर हमने interference form किया, तो there will be this point here
where the constructive interference will be formed. ये इसको हम बोल सकते हैं, this is a bright band, this is the dark band, this is again bright band, this is again dark band, again it is bright and dark, like this. So this is the formation of bright dark alternate bands in the interference pattern, remember correctly. So this is how the interference pattern actually looks like on the screen, remember. चलो इसके अलावा उसका भी बेसिक रीजन जो है तो वो हमको समझना है एक्चुअली. So see here, just like we can see here in this picture, that when the two waves arrive at a point simultaneously, and suppose both of them are in same phase, that means the crest of one wave just incidents on the crest of other. Here, if a trough of one wave incidents on the trough of other, then the resultant intensity of that wave is going to be maximum, like this. And this is the constructive interference, we can just say here. And the second type here is going to be destructive interference, in which the crest of one wave just incidents on the trough of other, and trough of one wave just incidents on the crest of other. And hence, in that case, the resultant intensity is going to be zero. The wave is not vibrating at all. No vibrations take place in this way. This is called as actually as a destructive interference. We can see here live in the two situations that when one wave is traveling in this direction and other wave is traveling in this direction, and it's suppose both of these waves are having crest. Here crest is traveling towards crest. So when this crest will meet with this crest, what will happen is there will be a jerk of bigger amplitude formed here at the center. Okay, and after that point the second wave will just pass towards left, and the first wave will just pass towards right after they meet. Okay, but this happens only momentarily. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों क्रस्ट आके मिलते हैं, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी फॉर्म होता है. मतलब उस मोमेंट पे ही सिर्फ यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनता है. बट आफ्टर द वेव जस्ट पासेस देयर इज नो इफेक्ट एक्चुअली. ठीक है ना. तो इस तरह से ये जैसे वो क्रस्ट आगे बढ़ जाएगा तो उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट हाँ, obviously if we just continue to give the crusts one after the another, then there will be a continuous effect produced at this point here, no doubt. Even यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, if suppose a trough is traveling towards right and suppose the crust is traveling towards left, when both of these will just meet each other, there will be no vibration at all. The wave will just cancel each other. Means this crust, trough and crust will just cancel each other and there will be no vibrations at this point. But when this crust will travel towards the left and this trough will travel towards the right, then they will just behave as if they were never meet each other at all. ठीक है ना. तो ये जैसे कि वो कभी मिले ही नहीं थे, इस तरह से बिहेव करके वो आगे बढ़ जाएंगे. So this is the particular instant. At a particular instant, whenever the two waves arrive at a point simultaneously, then they produce their own effects independently, and hence we can see that the resultant effect produced is always equal to the vector sum of the effects produced due to both of these waves at that point. Now we can just understand in this screen here, whenever the two waves starting from the two sources like S1 and S2 meet each other at a certain point, and suppose that the crest of one wave just incidents on the trough of other, then in that case we can just see that destructive interference takes place at that particular point only, and that at that particular point the resultant intensity will be minimum in this way, and hence we can say that there is this is called as a destructive interference. But on the other hand, if we just see here, the trough of one wave just incidents on the trough of another, then in that case, or crest of one wave just incidents on the crest of another, then in that case we'll call it as a constructive interference, which takes place only when the path difference between the two waves is just multiple of lambda, as in this case here the path is 6 lambda and here the path is going to be 8 lambda, and hence the difference in this is 2 lambda, which is just a multiple of lambda, and that's why there is a constructive interference taking place here. And path difference, path कैसे measure करना होता है वो भी तुमको बताया था already. यहाँ से अगर हम start करते हैं तो this is ये पूरा जो है ये एक वेव हो गया, ये this is 2 waves, 3 4 5 6
and then extra half. So that's why it will be 6 lambda. Sorry, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये सपोज क्रस्ट है, तो इधर से इधर तक एक वेव हो गया, 2 वेव्स, फिर 3, 4, 5 और फिर 6. तो इस तरह से 6 lambda ये हो गया उसका path of this first wave here. And if we just try to measure the path of the second wave, then we can just start from this point here and measure it as it is. This is 1 lambda, this is 2 lambda, this is 3 lambda, this is 4 lambda, then 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda, and 8 lambda, like this. So in this way we can just measure the path of these 2 waves and just find that they have a multiple of lambda path difference, which causes the constructive interference to take place there. And here in this previous case, if we just see, the path difference was multiple of half lambda, 0.5 lambda, because here the path is 4.5 lambda, as we can see from the diagram. Here we see, if we just try to measure this path here, then we can just be able to get that. यहाँ से अगर start करेंगे तो ये हो गया 1 lambda. This is again 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and 4.5 extra, आधा extra. और यहाँ से अगर इसका अगर path measure करते हैं तो हमको पता चलता है, इधर से अगर start करते हैं तो एक 1 wave, this is second wave, the third wave, fourth wave, fifth wave and 6th wave as it is. So this is 6 lambda, that is the path difference, path of the second wave. And if we just have this 6 lambda minus 4.5 lambda, then we can be able to get that it comes out to be 1.5 lambda, which is just a multiple of lambda by 2, because we can write it as 1.5 lambda can be written as 3 lambda by 2, right? So 3 lambda by 2 means 3 times of lambda by 2, and that's why there is a destructive interference formed in this case here. Okay, तो इस तरह से ये हम सब तो समझ सकते हैं कि whenever there is a destructive, whenever there is a path difference of lambda or 2 lambda or multiple of lambda, then we can find the constructive interference. And whenever there is a path difference of lambda by 2, we can just say that there is a destructive interference. Yes, here you can see the Young's double slit experiment, in which one slit is formed here, one slit is kept at this point here, at point O suppose, and then the light just travels in the form of spherical wavefronts like this, and then it just incidents on the 2 holes which are marked here on the cardboard. एक particular plane में 2 holes mark किए होते हैं, और जब ये light spherical wavefronts के form में incident होता है यहाँ पे, so the 2 points of the same wavefront acts as a secondary source here, and they send out the secondary waves in the other side of this wavefront of this cardboard, so that these waves are just emitted in the form of spherical wavefronts once again. And whenever they incident in such a way that the crust is incident on the crust and trough is incident on the trough, there will be a constructive interference, which we can just say, see on the this line. ये पूरा जो line है ये constructive interference वाला line बनता है, और ये जो है ये पूरा line यहाँ पे destructive interference हो रहा है, because there is shadow, or we can say it a black region, there is no dark region, we can say. And again here it is the constructive interference taking place at this line. Again here it is the destructive interference taking place on this line. Again the constructive interference is taking place on this line, and destructive and constructive alternately like this. You can just see clearly. So the points where the destructive interference takes place are always in the straight line, and the points where the destructive interference takes place are also in the straight line, same straight line, no doubt. So this diagram itself makes it very, very clear how the interference is formed in this way. And now we can just go to the next slide to understand it in the better way. See it here. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं clearly कि इस तरह से जब प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इट गेट स्प्लिट अप इन डिफरेंट पार्ट्स. तो यहाँ पे एक जो सोर्स है, ये एक स्लिट जो हमको मिल रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा स्लिट हमको मिल रहा है. ये एक स्लिट और ये एक स्लिट है. इन दोनों स्लिट्स में से जब लाइट पास होता है तो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट्स के फॉर्म में वो इमिट होता है.
और जहाँ जहाँ पे वो क्रस्ट जाके क्रिस्प पे इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, और जहाँ जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ मीट होते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है। और ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं जो कि ऑल्टरनेट होते हैं। तो वही हमको इसी डायग्राम से भी बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। Yes, now we can just see this is how Youngs have done the experiment practically. तो practically इस तरह से उसने यहाँ पे किया था कि ये source of light was just kept at this point here. तो यहाँ पे एक सोर्स रखा था जिसमें से वेव्स लाइट जो निकलने के बाद इस फर्स्ट स्लिट में से पास होके ये उसके सामने, बिल्कुल सामने, ये दो स्लिट्स इस तरह से रखे हुए थे जिसमें से लाइट जब पास होता है तो उसके बाद उसके में से पास होने के बाद यहाँ पे सामने वाली स्क्रीन पे ये जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट बैंड्स इन दिस वे। ये सब जो ब्राइट डार्क बैंड्स दिख रहे हैं आपको, this is the formation of interference pattern on the screen actually. Remember, this is the Young's double slit experiment. We can just understand practically. तो practically इस तरह से ही अचीव किया गया था, जिसके अंदर दो कार्डबोर्ड्स और एक स्क्रीन यूज किया गया था। ठीक है, दिस इज द अगेन व्हाट वी कैन सी द सेम थिंग हियर। तो ये सिर्फ यहाँ पे अलग ओरिएंटेशन में अलग एंगल से हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें से ये जो फर्स्ट स्लिट है इसमें से जब लाइट पास होगा तो इट विल जस्ट स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। वी कैन जस्ट गेट दैट अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो रेड कलर से जो दिख रहा है वो क्रस्ट है और सपोज जो येलो कलर से दिख रहा है वो ट्रफ है। तो जब ये इस दो स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इधर से फिर से नए नए फिर वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक तरह से सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करते हैं और वहां से दो लाइट नए सेकेंडरी वेव्स इमिट करते हैं जो कि फिर से क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में इमिट होते हैं। और अल्टरनेटली हमको क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं जो कि यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दिस इज द डार्क बैंड, अगेन ब्राइट बैंड, dark band, bright band, dark band, and bright band like this. So these dark and bright bands are just alternately produced on the screen in this way. So this is what you can just see in the diagram. And now we can just see this diagram so as to make it clear what we have done in the theory. तो डेरिवेशन के अंदर हमने जो किया था तो वो हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं आराम से। Yes. So just see here. जैसे कि हम जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक स्लिट जो है, सबसे पहला जो स्लिट है, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट, source of light, so that the wave front, the spherical wave front will be formed at this point here. So this first wave here is crust, and the second dotted line जो है, it is the crust trough, and so on like that. So alternate crust troughs form होते हैं यहाँ से। लेकिन जब इस दोनों स्लिट्स ए और बी को जब वो टच करते हैं तो उस केस में दोनों पॉइंट्स ए एंड बी दोनों पॉइंट्स एक तरह से सेकेंडरी सोर्स बनते हैं और उनमें से निकलने वाले जो वेव्स है ये इस तरह से, तो वो वेव्स जाके इंटरफेयर करते हैं रीजन इस स्पेस में और वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स वेयर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी फॉर्म्ड व्हिच वी कैन मार्क देम एज दिस पॉइंट ई, दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी, G are the points where constructive interference is formed. But the points where destructive interference is formed, that means crust will incident on the trough and trough is incident on the crust, will be there, and that at those points the intensity of the light will be zero in this way. So D and F are those points where the destructive interference takes place, so that there will be no light at those points and dark band will be formed at those points. And at the same time अभी ये जो डायग्राम है यही हमने थियरी डिस्कस करने के लिए यूज किया था, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट P हमने कंसिडर किया था जहाँ पे S1 और S2 में से निकल के आके मिलने वाले जो वेव्स है उन दोनों के बीच में का जो पाथ डिफरेंस है, तो वो पाथ डिफरेंस हमने ढूंढ के निकाला था। और उसमें उस डेरिवेशन में हमने क्या सब किया था, दो ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही हमने पाथ डिफरेंस, इन दोनों का इक्वेशंस का डिफरेंस लेके हमने पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। और हमने पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद बैंडविड्थ का भी एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव किया था। ठीक है, और इसके बाद हमने ग्राफिकल वेरिएशन भी देखा था। इफ यू जस्ट सी द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी graphically on the screen, then we can just find out that the intensity just varies
from minimum to maximum and maximum to minimum again on the screen alternately. And as we just go away from this center at a distance x, the intensity just goes on increasing and decreasing alternately in this way on the screen. And that's why we can just get a particular point at which the intensity is maximum, which we can call it as a bright band, and the intensity where the point where the intensity is minimum, we can call it as a dark band. And these bright and dark bands are just produced alternately, and they are just equispaced after equal distances. And the distance between any two bright bands is actually called as bandwidth. ये जो distance है, इसको हम बोल सकते हैं bandwidth. ठीक है? This is called as bandwidth. Even the distance between two dark bands also like this. ये जो दो dark bands के बीच में का जो distance है, इसको भी हम as it is एक तरह से bandwidth बोल सकते हैं, no doubt. So this is the bandwidth, and this bandwidth is obtained in the last lecture to be simply capital lambda into capital D upon small d. This is the expression for the bandwidth in this case of the interference pattern, no doubt. Yes, so this is what we have already seen in the last few lectures. Now just let us start this lecture, today's lecture now. Yes, now we can just see the methods of producing the coherent sources, and also we have to see the concept of optical path difference, right? तो देखो ठीक से अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what are the methods to produce the coherent sources. तो सबसे पहला जो मेथड है तो वो है जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने यूज किया था कोहेरेंट सोर्सेस के. एज वी ऑलरेडी सीन दैट द कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी दो सोर्सेस के बीच में का जो पार्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज द वेव्स आर नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली but they are emitted in the form of packets, and because of that only we can just say that the path difference changes time to time, and that's why it is very very difficult to produce the coherent sources here. But the first simple method is the Young's double slit experiment. In Young's double slit experiment we have Young's have just able to produce the coherent sources in a very very simple way. The second is the method of Bragg's law. The third is the Lloyd's mirror. And the fourth method is the Fresnel's biprismic. Okay, so let us see all these one by one. Okay, so first is very very clear, and it's already we have done it in last lectures, because we have already seen that if suppose one cardboard is kept on at some distance, suppose at this point here, एक cardboard हमने यहाँ पे रख दिया suppose इस तरह से, और उसको एक स्लिट अगर हमने गिरा दिया है, so it means we have marked one slit on this cardboard here. Suppose ये suppose हमने एक slit यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और उसके सामने दूसरा कार्डबोर्ड हमने रखा है. This is the second cardboard at which we have kept the two slits, parallel slits like this. Okay, in this way. So what will happen is the light emitted by this first slit here will just spread in the form of cylindrical wavefronts in this way. तो यहाँ से जो waves है वो cylindrical wavefronts के form में फैलेंगे, and when they will just touch this point here, this second cardboard here, the 2 points of the same wavefront will act as secondary sources, and they will just produce the secondary waves in the another part of this cardboard, and these waves will just be considered to be coherent.
because the phase difference between them will be constant, always constant, because they are emitted by the 2 points of same wavefront. ठीक है ना, एक ही वेवफ्रंट के 2 पॉइंट्स को हमने एक सेकेंडरी सोर्स के फॉर्म में यूज किया है. इसकी वजह से वहां पे जो भी पार्ट फेज डिफरेंस, मतलब जो भी फेज एक वेव का होगा वही फेज दूसरे का भी होगा, क्योंकि वेवफ्रंट एक ही वेवफ्रंट के सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही फेज में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं. इसलिए यहाँ पे हम इन सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस की तरह यूज कर सकते हैं, नो डाउट. So this is the first method to produce the coherent sources, that is Young's double slit experiment, the Young's method to produce these coherent sources.